Assalamu alaikum. So today we would begin the third lecture in the series of MOSFET, that is metal oxide semiconductor field effect transistors. To remind you once again, in the last two lectures we studied the physical structure of the MOSFET transistor, and then in the second lecture on the same series we discussed the qualitative aspects of the transistor operation. Now today we would derive some of the ID-VD relationships, that is the drain current and the drain voltage characteristics of this MOSFET N-channel transistor. These are the three topics that I will be discussing in today's lecture. And as usual, the reference is again Cedra Smith, and it's chapter 4 of the particular edition that I am using. Now you would recall I had given you this symbol representation of the MOSFET transistor in my earlier lecture too, but let me just as a summary revise once again what this circuit symbol means. As we discussed before, that we are using as an example or as a reference, we are using an N-channel metal oxide semiconductor transistor, and it is in the enhancement mode that we had been studying this device. What does N-channel mean? It simply means that the structure of fabrication of the device is such that we have deposited two heavily doped N-side materials on top of a P substrate. So our starting material, that is the substrate, is the P-type material, and on top of that we deposit heavily doped two N-type regions. One is connected with the electrode labeled as the source S, the second one being the drain. So source and drain electrodes are connected with the source and drain heavily doped N-type region. The middle one is called the gate, and beneath the gate metal electrode we deposit an oxide layer. So this is the name derived from the physical structure of a MOSFET transistor, the way it is fabricated: metal oxide semiconductor transistor. Then we had discussed the mechanism of operation. Well, the mechanism of operation was, as we discussed, that we create an electric field by generating a potential difference between these three electrodes, namely the source, the gate and the drain. तो सबसे पहले अगर आपको याद हो, हमने गेट को एक पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था. वाई पॉजिटिव? बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू द पी टाइप सबस्ट्रेट वी गिव अ ऑपोजिट पोटेंशियल टू द गेट. तो गेट को हमने एक पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था, सोर्स रिमेनिंग ग्राउंडेड, सिमिलरली ड्रेन रिमेनिंग ग्राउंडेड. तो एज वी इंक्रीज द गेट वोल्टेज हमारी एक लेयर्स क्रिएट होती हैं, इन्वर्शियल लेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द डिप्लीशन रीजन, जिसको मैं अगली 2-3 स्लाइड्स में दोबारा रिपीट करूंगी. उसके बाद हमने सेकेंड स्टेज में जाके एक पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रेन को भी दिया था विद रिस्पेक्ट टू द गेट. सो अलोंग द चैनल दैट इज क्रिएटेड वी हैव क्रिएटेड अ पोटेंशियल डिफरेंस varying from source to gate and from gate to drain respectively, and hence in response to this electric field or potential in response to this potential variation, an electric field is created, and the electrons thus drift in this so-called created induced N-channel. The electrons drift and we get a current. So this is a very simplified summary of the operation of a field effect transistor. Now in this transparency I have again chosen the N-type enhancement metal oxide semiconductor transistor. And as before, as I explained before, you would identify 4 terminals. One, the S terminal, that is the source, the gate, and the top one being the drain electrode terminal. In the middle you would see the base or the bulk of the P substrate, and you would recall I had mentioned before that the two parallel plates between the base, that is the bulk of the P-type substrate, and the ground, they are separated by the oxide layer. And the oxide layer in this case is acting as an insulator or dielectric medium between the gate and the bottom P-type substrate layer. The separation between them indicates the oxide thickness,
And hence, later on in one of the slides, we will also mention that we can associate capacitance per unit area with this gate and p-type substrate and define the capacitance and use the capacitance while we are evaluating the current density and the current flowing in this transistor. So this is a symbolic representation. We had also illustrated the directions of the current flow in this enhancement type N-channeled MOSFET transistor. As I mentioned, that if we apply a positive voltage to the gate, to the drain with respect to the gate and the source, then the electrons would move from source to drain under the influence of this applied electric field, and hence the current would flow in the opposite direction from drain to source, and these directions are indicated. Since the gate current is 0, so obviously I had written the total drain current is the source current, or the source current reaching from drain is equal to the drain current. So these symbols justify the presence of the capacitance as well, which is and the dielectric being the silicon dioxide layer which we have deposited on top of the p-type substrate. The spacing between the two vertical lines that represent the gate and the channel indicates the fact that gate electrode is insulated from the body of the device, and the body of the device, as I just mentioned, in this case is p-type substrate, because we have fabricated an NMOS N-channel metal oxide semiconductor. The drain is always positive relative to the source in an N-channel field effect transistor. Now I would move on to the qualitative description or mechanism of the operation of this metal oxide semiconductor transistor, and we touched upon this aspect on this principle of operation in our last lecture as well. So for the sake of the continuity, because today we are about to discuss the current voltage characteristic, we will repeat some of the mechanism again. Now, as I mentioned in my previous lecture, there are three distinct mode of operation depending upon three distinct values of the gate voltage, and we classify the entire current voltage IV characteristic of the MOSFET into three regions. The first is called the cutoff region, where you do not have any current and no voltage is not a significant voltage is applied to the gate. That is, the gate voltage is below some threshold voltage, which is threshold voltage is the minimum voltage given, positive voltage given to the gate that would allow some current to flow in the transistor from drain to source. And since the gate voltage, the positive gate voltage is below that threshold voltage, obviously we will not get any current. Therefore, this is a cutoff region. And to point out again that in the cutoff mode region, we do not have any drain voltage either. The second is the linear region, in which the drain current rises linearly in response to the applied drain voltage, and therefore in this mode, when there is a slight positive voltage, small positive voltage applied to the drain, and keeping the gate voltage greater than the required minimum threshold voltage, that is, if the gate voltage is greater than the threshold voltage and the drain to source voltage is less than this VGS minus VT. VGS minus VT voltage is defined as the effective voltage, which gives rise to these variations in the current in response to the applied drain voltage. So in the linear region, the current increases as VD, that is, the drain voltage increases at a fixed value of the gate voltage VG, and also as gate voltage increases, the ID also increases. So this is the linear region. And then we have finally the saturation region, in which even when we increase the drain voltage, no rise or no increase in the drain current takes place. So these three are listed for you to understand later on the when we draw and discuss the variation in the, when we plot the current versus drain voltage characteristics of a given N-channel enhancement type
field effect transistor. Now, to understand the mechanism of operation once again, I have tried to show the physical structure of the device once again. And as I mentioned, here I am going to use a transistor which incorporates or which induces an N channel, and it is an enhancement type. I shall explain these two terminologies, that is the N channel, inducement of an N channel within the transistor, and enhancement type also once again. Now, as you see very clearly, there is a p-type substrate marked as blue, and then on this p-type substrate we have created two heavily doped N-type region, one on the right side of this physical structure, one on the left, and in the middle you see that the gate is in contact with the p-type substrate unless we deposit an oxide layer. So an oxide layer in between the gate metal, gate electrode, and the p-type semiconductor material. So the gate and p semiconductor material of the substrate are separated by the oxide layer. And as I mentioned in my last lecture, the thickness of the oxide layer is determined by the fabrication technology and is of the order of nanometer. So the thickness is quite small as compared to the channel length, which is of the order of micron meter. Now you see all the four electrodes in this transparency once again. B is the body, that is the substrate, and then we have the source and gate and drain respectively. Now body, that is the substrate, p-type substrate, is normally grounded or connected with the source, and source is grounded as well. So source and the p-type substrate are joined together and grounded, so we are left only with three effective terminals, namely the source, the ground, the gate, and the drain D. In this transparency, I have also mentioned that the gate could be a metal. A gate could be let's say, for example, it could be an aluminium layer that we deposit as a gate material, or it could be a polysilicon crystalline material. So this is a very simple illustration of the structure, physical structure of the transistor, that we have on the bottom, on the very start, we have a p-type substrate. Then on top of p-type substrate we have grown to heavily doped N-type regions and marked them as source and the drain, and the middle one being the gate. Gate is made of is of some metal, and hence the name metal oxide semiconductor field effect transistor. And below the metal we have an oxide layer. So for the time being, you see that the source, heavily doped source, N-type source, and the heavily doped N-type drain are separated physically by the P region, that is the substrate, as you can see very clearly. And below the gate metal there is an oxide layer. So the physical structure has been illustrated very clearly in this particular slide number 8, and this is a slide in which it is depicted that no voltages have been given to either the gate or the drain, that is, all the three terminals are grounded at the moment. Next we would move on and show that when a gate voltage has a very small voltage or below zero voltage, that is a negative voltage, obviously no big changes take place. That is, we have given a slight we have not given any positive voltage to the gate in order to form or induce an N channel or to create a depletion region. So in this case, again, I have written below the red VGS, I have written that the structure is still like N heavily doped N plus source connected with the p-type substrate, and p-type substrate is connected with the heavily doped N plus drain region. So it is still an N plus P N plus structure, and hence no current flows, because we have not created any
channel or path for the electrons to flow, because we have not applied any potential difference to any of the electrodes. We have thus not created any electric field, and therefore the current in the device would be zero. So let's compare this slide once again with the previous slide, which shows the simple structure of the MOSFET field effect transistor. So you see here is a structure in which all the three electrodes, source, gate and drain, are grounded respectively. Now, even though we had applied a small voltage to the gate, whether it is a negative voltage or very small positive voltage, in both the cases the structure would still remain as n plus p structure. That is, no electron layer has been induced, no depletion region has been created, and hence the drain current would be zero. Now the next step would be that we apply some positive voltage to the gate as is indicated, but this gate voltage is still smaller, less than some minimum voltage which we have defined as the threshold voltage. तो जब हमारी गेट वोल्टेज अभी थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, ड्रेन हमारा ग्राउंडेड है, इसीलिए मैंने एक बॉक्स में लिखा हुआ है कि ड्रेन वोल्टेज इज द सेम एज द सोर्स वोल्टेज, which means both are grounded. तो सिर्फ हमने एक सिंगल वोल्टेज दी है, वो किसको दी है? गेट को with respect to the source. और आपको नजर आ रहा है कि with respect to the source, which I have marked as at a relatively negative potential compared to the gate, which is at a relatively positive potential. तो आपको मैंने इंडिकेट किया है कि पॉजिटिव पोटेंशियल हमने अब दे दिया है गेट को, और जो एक नई चीज़ आपको, नया फिनोमेनन या मैकेनिज्म यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि P type holes because of this positive potential given to the gate, इसलिए मैंने पॉजिटिव साइंस दिखाए हैं कि अब मैंने गेट प्लेट को एक पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है, जिसकी वजह से हमारे होल्स पॉजिटिवली चार्ज होल्स नीचे पुश डाउन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब हमने गेट को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया तो विद रिस्पेक्ट टू दी पी टाइप सबस्ट्रेट जो कि ग्राउंडेड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली, वर्टिकली आपके ये फील्ड जा रहा है फ्रॉम गेट टू पी टाइप सबस्ट्रेट. तो इस फील्ड की वजह से जो आपके होल्स, मेजॉरिटी होल्स हैं पी टाइप सबस्ट्रेट में, वो नीचे की तरफ पुश हो रहे हैं, और जब होल्स मोबाइल चार्जेस मूव कर जाएं तो फिर पीछे वो अनकवर कर देते हैं अनकम्पनसेटेड एक्सेप्टर आयन की लेयर. और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक एक्सेप्टर आयन जब अनकवर हो जाए तो पीछे एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है. तो ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन हुआ ऑफ अप्लाइंग द पॉजिटिव गेट वोल्टेज, कि जो ही आपने गेट को पॉजिटिव वोल्टेज दी, जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी दिखाई है गेट के ऊपर, होल्स नीचे पुश डाउन हो रहे हैं और एक वाइट यूनिफॉर्म लेयर आपको हॉरिजॉन्टली क्रिएट होते हुए नजर आ रही. दिस वाइट लेयर represents the depletion region created in response to a positive voltage applied to the gate. Let's compare this with the previous slide once again. यहाँ देखिए हमने कोई वोल्टेज नहीं दी हुई है गेट को, या अगर दी हुई है तो वो बहुत स्मॉल वोल्टेज है, यानी ऑलमोस्ट 0 वोल्टेज टू द गेट. तो हमने देखा कि कोई आपके डिप्लीशन लेयर भी नहीं क्रिएट हुई, कोई एन चैनल या एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, यानी द डिवाइस स्टिल रिमेन्स एज इट वाज बिफोर as it was when all the 3 electrodes were grounded या at 0 potential. अब थोड़ा सा पोटेंशियल देने के बावजूद भी डिवाइस हमारी बिल्कुल उसी तरह है जिसको मैंने अब कहा, जिसको मैं अभी भी n प्लस पी n प्लस स्ट्रक्चर कह रही हूँ, क्योंकि आपका सोर्स n प्लस है. सोर्स के बाद जब हम मूव कर रहे हैं इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो सोर्स के बाद हमारा पी टाइप सबस्ट्रेट है, और पी टाइप सबस्ट्रेट के साथ फिजिकली जॉइंड है हमारा n प्लस ड्रेन. सो द स्ट्रक्चर इज स्टिल बीनीथ द oxide layer. The structure is still n plus p n plus MOSFET structure. अब अगली देखिए, इस स्लाइड को कंपेयर कीजिए पिछली स्लाइड से. यहाँ हमने एक
गेट वोल्टेज को, पॉजिटिव गेट वोल्टेज को थोड़ा सा इन्हांस किया, इंक्रीज किया, लेकिन अभी भी ये वोल्टेज थ्रेशोल्ड से कम है। तो इस रीजन को मैंने फिर क्या लिखा, इस मैकेनिज्म को, इस स्टेप को, इस मोड, इस अब तक जो हमारा प्रोसीजर हुआ है, अब तक जो हमारा ऑपरेशन हुआ है, उसको मैंने लेबल किया है n प्लस डिप्लीशन n प्लस स्ट्रक्चर। तो इसको लेट्स कंपेयर वंस अगेन। जब हमारे पास कोई वोल्टेज अप्लाइड नहीं थी, all the three terminals are grounded, the structure remains, the physical structure is still n plus source connected, joined physically with p-type substrate, p-type substrate joined physically or is in contact with heavily doped n plus drain. So you can very clearly see an n plus p n plus structure as we move along the positive direction from source to gate to drain. अगली स्लाइड देखिए। इवन दो आई हैव अप्लाइड सम वोल्टेज, लेकिन वो इतनी सफिशेंट नहीं है कि डिप्लीशन रीजन क्रिएट करे या एक्यूमुलेशन लेयर जनरेट करे, तो स्ट्रक्चर स्टिल रिमेन्स n प्लस p n प्लस स्ट्रक्चर। तो जो टॉप में ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है वो मैकेनिज्म नज़र आ रहा है, जो कि इन रिस्पॉन्स टू द अप्लाइड गेट वोल्टेज आपको नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट स्लाइड in which I have now applied some gate voltage, but the gate voltage is not sufficient to generate a depletion layer or to induce an N channel. तो मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर अब भी n प्लस p n प्लस रहा। अब आप थर्ड स्लाइड को देखिए। गेट वोल्टेज मैंने स्लाइटली इंक्रीज की है, लेकिन अभी भी इट इज़ बिलो द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो अब क्या हुआ, इस इंक्रीज्ड पॉजिटिव गेट वोल्टेज की वजह से होल्स आर बीइंग पुश डाउन, लीविंग बिहाइंड एन अनकम्पनसेटेड एक्सेप्टर आयन की लेयर एक छोड़ देते हैं। उस एक्सेप्टर आयन की लेयर की वजह से आप देखें कि एक वाइट रीजन क्रिएट हुआ, जिसको मैंने लिखा है डिप्लीशन रीजन, क्रिएटेड और जनरेटेड ड्यू टू दी अप्लाइड गेट वोल्टेज। तो मेरा स्ट्रक्चर किस तरह मैंने डिफाइन किया कि n प्लस डिप्लीशन n प्लस स्ट्रक्चर। The current you would notice the drain current is still 0, क्योंकि हमने अभी तक कोई चैनल या पाथ नहीं क्रिएट किया इलेक्ट्रॉन्स के लिए टू मूव फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, एंड बिसाइड्स द ड्रेन इलेक्ट्रोड जो है वो अभी भी ग्राउंडेड है। सो बिकॉज द ड्रेन इलेक्ट्रोड इज ग्राउंडेड, देर इज नो चैनल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सोर्स टू मूव from source to drain. Hence logically there would be no, we cannot expect any current flowing from drain to source. तो ये आपकी थर्ड स्लाइड है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव गेट वोल्टेज लगाने के नतीजे में हमारे पास डिप्लीशन लेयर तो क्रिएट हो गई, बट द वोल्टेज इज स्टिल नॉट सफिशिएंट टू जनरेट एनी ड्रेन करंट। सो वी वुड मूव ऑन अ स्टेप फर्दर। अब देखिए पिछले केस में क्या था, the gate voltage is below some threshold voltage, और अब हमने उस वोल्टेज को बढ़ा दिया है। it is now higher, is greater than some threshold voltage। तो आप देखिए कि schematically मैंने वोल्टेज को भी दिखाया है। यहाँ हमारी वोल्टेज बहुत कम है, पॉजिटिव वोल्टेज गिवन टू द गेट इज़ क्वाइट स्मॉल, उसको मैंने 3 पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किया है। यहाँ मैंने वोल्टेज को बढ़ा दिया है, उसको स्कीमेटिकली आपको समझाने की खातिर मैंने गेट प्लेट पर 9 पॉजिटिव सिंबल्स ड्रॉ किए हैं, विच मीन्स स्लाइटली हायर, मोर पॉजिटिव एज कम्पेयर टू द प्रीवियस केस। अब यहाँ देखिए क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। पिछले केस में वोल्टेज अप्लाई की थी मगर कम थी, लिहाजा डिप्लीशन रीजन सिर्फ क्रिएट हुआ। अब क्या हो रहा है कि अब आपकी वोल्टेज सिग्निफिकेंटली, पॉजिटिव वोल्टेज जो आपने गेट को अप्लाई की है, दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर एज हायर देन द वोल्टेज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो जो पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो अब अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव, टुवर्ड्स द गेट, पॉजिटिव गेट प्लेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्टिकल फील्ड, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि आपकी नीचे की सबस्ट्रेट पी जो है वो ग्राउंडेड है, टॉप का गेट जो है उसको आपने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वर्टिकली फ्रॉम गेट टू पी टाइप सबस्ट्रेट। तो माइनॉरिटी कैरियर्स जो हैं पी सबस्ट्रेट के वो अट्रैक्ट हो रहे हैं
पॉजिटिवली चार्ज गेट प्लेट की तरफ। तो आप देखिए वो मैंने एक लेयर आपको, एक ऑक्साइड के नीचे अब आपको एक इलेक्ट्रॉन लेयर नज़र आ गई, उस इलेक्ट्रॉन लेयर के नीचे आपको वाइट डिप्लीशन रीजन नज़र आ है। सो लेट्स रिपीट दिस सीक्वेंस अगेन। द ग्रीन इज़ द ऑक्साइड लेयर जो कि इसके स्ट्रक्चर में हमने इनकॉर्पोरेट की थी कि मेटल ऑक्साइड, हमने मेटल डिपॉजिट की, उसके नीचे एक ऑक्साइड लेयर थी, उसके नीचे एक सेमीकंडक्टर था पी टाइप। So if we start from the top and go down vertically, the metal, the gate is metal, then we have silicon dioxide which is an insulator oxide layer, and then at the bottom we have semiconductor p-type semiconductor substrate. तो अगर हम vertically नीचे जाएं तो इस metal oxide semiconductor MOS। तो अब हमने गेट को पॉजिटिव, हायर पॉजिटिव वोल्टेज देने के बाद हमने क्या देखा कि डिप्लीशन रीजन, वाइट रीजन मौजूद है आपका, होल्स अभी भी हायर पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से मोर होल्स आर बीइंग पुश्ड डाउन, डिप्लीशन रीजन आपका वाइडर हो रहा है। एक नया फिनोमेनन जो आपको नज़र आ रहा है कि ऑक्साइड लेयर और वाइट डिप्लीशन लेयर के बीच में अब एक एन इलेक्ट्रॉन्स की एक एन लेयर क्रिएट हो गई है, एन टाइप लेयर क्रिएट हो गई है माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो कि पी टाइप सबस्ट्रेट से अट्रैक्ट होके गेट की तरफ जा रहे हैं। सो लेट मी कंपेयर अगेन। ये देखिए यहाँ सिर्फ आपके पास ऑक्साइड लेयर है, ऑक्साइड लेयर के नीचे डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ है। नाउ वी हैव क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा electron channel. The electrons have been accumulated under the oxide layer, and this phenomenon is termed as the induced n-type channel, क्योंकि आपने electrons, minority electrons को p substrate से ऊपर पुल किया है positive plate of the gate ने। तो इस हवाले से हमने इसको नाम दिया n channel या induced n channel। अगर ये हमारा पी मॉस होता तो उस केस में हमारे माइनॉरिटी होल्स होते, इलेक्ट्रॉन हमारी सबस्ट्रेट होती और एन टाइप हमारी सबस्ट्रेट होती। एन टाइप में होल्स जो हैं वो माइनॉरिटी में होते और होल्स गेट की तरफ अट्रैक्ट होते। दैट वुड हैव बीन द फॉर्मेशन ऑफ अ पी टाइप चैनल। तो इस अब ट्रांसपेरेंसी में आप देख सकते हैं कि अब हमने एक क्रिएट कर दी है n type layer या induced n channel. It is referred to as sometimes, इसको हम इसीलिए induced n channel कहते हैं क्योंकि ये induce हुई है in response to the positive voltage that you have applied to the gate. So let's emphasize once again that our gate voltage now is greater than the threshold, some minimum threshold voltage, or VDS, that is the voltage to the drain is still 0, that is VD is equal to VS is equal to 0, कि हमने अभी तक ड्रेन को कोई वोल्टेज नहीं दी है। तो ये दो mechanisms हुए हैं in response to an applied voltage to the gate. Number one, creation of our depletion layer, और दूसरा accumulation या generation of an induced n channel beneath the oxide layer. अब ये डिस्कस करने के बाद हम क्वांटिटेटिव आईडी वर्सेस वीडी रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह जब हम ड्रेन को वोल्टेज दें तो करंट किस तरह प्रोड्यूस होती है and how does it varies in response to the gate voltage. तो ये दो चीज़ें हम दी ड्रेन करंट को हम दो डिफरेंट पैरामीटर से कोरिलेट करेंगे कि एक तो गेट वोल्टेज इटसेल्फ, कि गेट वोल्टेज को बढ़ाने से ड्रेन करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, और दूसरा ड्रेन वोल्टेज को बढ़ाने से ड्रेन करंट पे क्या असर पड़ता है। तो ये मैंने दोबारा आपको ये ट्रांसपेरेंसी दिखाई है एंड दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप कि जब हम दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप कि जब हम दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप दैट व्हेन वी नाउ हमने शुरू में कोई वोल्टेजेस अप्लाई नहीं की थी, गेट को, सोर्स को, ड्रेन की, फिर सेकंड स्टेज में हमने सिर्फ गेट को एक वेरी स्मॉल वोल्टेज अप्लाई की थी, थर्ड स्टेज में हमने गेट को एंड वोल्टेज को बढ़ाया था अबव द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब फोर्थ स्टेज में हम ड्रेन को भी एक पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं। तो जब हम ड्रेन को पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो जो हमारा डिप्लीशन रीजन है एंड द इन्वर्शन लेयर है, ये दोनों
बढ़ते हैं और जो हम ड्रेन वोल्टेज बढ़ाते, जो हम ड्रेन के पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल को, एक स्टेज ऐसी आएगी कि चैनल विड्थ इंक्रीज होती जा रही है, यूनिफॉर्म नहीं रहे, और एक स्टेज पे एट सम वेरी हाई ड्रेन, पॉजिटिव ड्रेन पोटेंशियल, ये पिंच ऑफ हो जाएगी एट द पॉइंट, एट द ड्रेन पॉइंट। और वही चीज़ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। और ब्लैक में आपको इन्वर्शन लेयर नज़र आ रही है, विच इज़ द एन चैनल प्रोड्यूस्ड बाय अट्रैक्टिंग द माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पी टाइप सबस्ट्रेट, जब आप गेट को कोई पॉजिटिव हायर वोल्टेज देते हैं। So as long as the gate potential is smaller, lower than the threshold voltage, inversion layer charge is 0. तो आपको कोई इसमें नज़र नहीं आता। I can show you that slide again. ये देखिए, यहाँ पर हमारे कोई इन्वर्शन लेयर नहीं है, लेकिन सॉरी, इट शुड बी स्लाइड, दिस स्लाइड। आप देखिए कि कोई इन्वर्शन लेयर हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही, सिर्फ डिप्लीशन रीजन नज़र आ रहा है। लेकिन अब यहाँ आपके इन्वर्शन लेयर क्रिएट हो गई क्योंकि हमने वैल्यू बढ़ा दी है। तो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ इन्वर्शन लेयर चार्ज इज 0. दिस शुड हैव बीन, आई एम सॉरी, slide 10. And when we increase the gate voltage above the threshold voltage, then we have generated an accumulation layer या N type channel, and therefore the inversion layer would contains a total charge of Qn, and this charge, जैसे मैंने शुरू में आपको relate किया, शुरू में मैंने आपको बताया कि we can treat the metal oxide semiconductor as a parallel plate capacitor, gate being one plate and the source and drain being the other plate, और इनके बीच में हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं, और डाइलेक्ट्रिक जो है वो डाइलेक्ट्रिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का है। तो उसी वजह से मैंने उस तरह से अगर आप बेसिक सिंपल डेफिनेशन लिखें कैपेसिटेंस की, इफ़ यू डिफाइन द कैपेसिटेंस एज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल C is equal to Q over V, then I can calculate the total charge which is in response, which we get in the depletion, in the accumulation region in response to an applied positive potential at the gate. तो जब गेट का पोटेंशियल हमारा सम थ्रेशोल्ड वोल्टेज से एक्सीड कर जाए, बढ़ जाए, तो टोटल चार्ज जो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में स्टोर हो रहा है Qn, the charge stored, if I take the vertical as y axis, तो टोटल चार्ज आपका जो स्टोर हो रहा है n रीजन में, that is equal to minus Qg, यानी ये चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज है और जो गेट के नीचे आप स्टोर कर रहे हैं, दिस इज गिवन एज अ प्रोडक्ट ऑफ द oxide capacitance of the capacitance per unit area of the oxide layer in the device times the voltage that we have applied. तो Vg is the voltage जो हमने दी है, minus V is the threshold voltage, minus Vt is the threshold voltage, and V is the variation of the voltage, कि गेट की वोल्टेज एंड ड्रेन की वोल्टेज जो है इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स विच इज ग्राउंडेड। तो गेट की वोल्टेज इज विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स, हेंस इट इज टर्म्ड एज VGS। सिमिलरली ड्रेन की वोल्टेज जो है विच इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द गेट एंड सोर्स बोथ, तो हम इसको VDG या VDS भी कहते हैं। सो V इज देयरफॉर विदाउट एनी सबस्क्रिप्ट, जो आपको यहाँ वोल्टेज नज़र आ रही है, this is the voltage as we move along the channel from source to gate to drain। तो आप देख सकते हैं इस ट्रांसपेरेंसी में कि सोर्स ग्राउंडेड है, ड्रेन को हमने कोई पॉजिटिव वोल्टेज VD दी हुई है, गेट को भी हमने कोई पॉजिटिव वोल्टेज VG दी हुई है। तो जैसे जैसे हम सोर्स से गेट की तरफ जा रहे हैं पोटेंशियल वेरी कर रहा है, और फिर जैसे ही हम गेट से ड्रेन की तरफ मूव करें तो पोटेंशियल की वेरिएशन कंटिन्यूस है। इस एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैंने इस ट्रांसपेरेंसी में y एक्सिस लेबल किया है, एंड माय x एक्सिस इज द डेप्थ of the depth of the MOSFET device, which is downward. So why thus the charge as we move from source to drain would be a function of y that is along the horizontal axis.
और जो आपको नज़र आ रहा है कि अब इस कंडीशन में व्हेन द गेट वोल्टेज इज़ हायर देन द मिनिमम थ्रेशोल्ड वोल्टेज, देन द thickness of the inversion layer or n channel thickness will no longer be uniform. It would taper off, and hence the charge stored in the depletion region becomes non-uniform. It is a function of y as we move along the depth of the channel. ये स्लाइड इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस स्लाइड को लेके आगे मैंने यूज़ करना है in the actual quantitative calculation of the ID as a function of the applied drain voltage VD for some fixed values of the gate voltage. तो अब हम ये मैंने दोबारा लिखा है कि मुझे कैपेसिटेंस की फॉर्म में ये चार्ज को क्यों कैलकुलेट करना पड़ा। ये देखिए, ये टोटल चार्ज जो इस डिप्लीशन रीजन में आपको द टोटल चार्ज in the n channel या inversion layer में जो आपको नज़र आ रहा है, this charge I have expressed in terms of the capacitance per unit area of the oxide layer. तो उसकी वजह यह है कि मैंने कैपेसिटेंस को मैंने जो स्ट्रक्चर है डिवाइस का, यानी दी गेट प्लेट एंड दी सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल्स जो हैं उनको दो पैरेलल प्लेट अस्यूम किया है, और उनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ डाइलेक्ट्रिक, एंड देयर इज अ चार्ज स्टोर्ड। और ये चार्ज जो है ये हमारी इन्वर्शन लेयर है, यानी वो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स आके एक्यूमुलेट हो गए हैं गेट के नीचे फील्ड के रिस्पॉन्स में, क्योंकि हमने गेट को एक पॉजिटिव वोल्टेज दी है, सबस्ट्रेट को हमने ग्राउंड रखा है, तो वर्टिकली एक फील्ड जनरेट हो गया। Now there is another definition of the capacitance per unit area, which is the permittivity of the oxide silicon dioxide layer divided by the thickness. That is, it is simple definition हम दो दे सकते हैं, C is equal to Q charge per unit potential applied, and similarly the permittivity per unit per oxide thickness layer. तो इन दोनों सिंपल डेफिनेशंस को हम आगे यूज़ करेंगे इन कैलकुलेटिंग दी करंट एंड करंट डेंसिटी। अब ये सिंपल रिलेशनशिप्स मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए रिप्रोड्यूस किए हैं कि क्वांटिटेटिवली मैंने कैसे करंट का रिलेशन कैलकुलेट करना है मॉसफेट ट्रांजिस्टर में एज ए फंक्शन ऑफ द अप्लाइड ड्रेन वोल्टेज। आपको बहुत आसानी से ये याद होगा जब हमने डायोड में पीएन जंक्शन में ये रिलेशन निकाले थे कि करंट डेंसिटी, चूंकि अब इलेक्ट्रॉन, इफ़ यू रिकॉल द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द करंट फ्लो इन दिस ट्रांजिस्टर, अगर आप चाहें तो मैं वापस जा सकती हूँ और आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये देखिए, यहाँ इस ट्रांसपेरेंसी में आपको एक एन चैनल नज़र आ रही है ग्रीन ऑक्साइड लेयर के नीचे और वाइट डिप्लीशन रीजन के बीच में। द ग्रीन एंड वाइट रीजन के बीच में आपको एक एन चैनल नज़र आ रही है, और ड्रेन को जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, जो कि इस ट्रांसपेरेंसी में मैंने अभी नहीं अप्लाई किया हुआ, लेकिन जब आप ड्रेन को एक पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे तो ड्रेन और सोर्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जो कि डायरेक्टेड होगा जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, क्योंकि ड्रेन पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, सोर्स ग्राउंडेड है, तो ड्रेन से सोर्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। और आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी हेवीली डोप्ड एन टाइप सोर्स से फील्ड के ऑपोजिट मूव करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे सोर्स टू ड्रेन, और इलेक्ट्रॉन की करंट मूव करेगी फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स इन दी कन्वेंशनल डायरेक्शन। अब जो पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ वो ये है कि देखिए, हमारा फील्ड डायरेक्टेड है, फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम सोर्स टू द ड्रेन, दे आर मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सच अ मोशन जो कि फील्ड की वजह से हो उसको एक कैरेक्टरिस्टिक नाम दिया जाता है, दैट इज द drift motion. So the electrons move under the influence of the applied electric field, and hence it is a drift motion, and thus we can calculate a drift current density, जो मैंने इस स्लाइड में आपको रिप्रोड्यूस करके मैथमेटिकल रिलेशंस लिख दिए हैं, वेरी सिंपल।
So the electron current density in response to the drift motion, माइंड यू यहाँ पे कोई डिफ्यूजन मैंने नहीं कंसिडर की. दिस रिलेशन इज अ प्योर ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम the electrons moving from source to drain, and the drift current is flowing thus from drain to source. तो ये current density depend कर रही है Q, that is the charge, N density per unit volume of the free electrons which are present in the source, and mu n is the mobility, that is the ease with which the electrons flow in response to the applied field in the channel, N channel. तो Q mu n and E is the applied electric field, जिसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो आपने ड्रेन को पॉजिटिव वोल्टेज देके एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है. So these are the three terms which appear in the current density of the electrons, and it is a drift current density. अब इस करंट डेंसिटी जो है ये सेम नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि इट वेरीज द टोटल चार्ज स्टोर्ड, क्योंकि आपका एक्यूमुलेशन लेयर या इन्वर्शन लेयर जो इलेक्ट्रॉन की क्रिएट हुई है, जैसे जैसे हमने पोटेंशियल बढ़ाया उसकी विड्थ यूनिफॉर्म नहीं रह रही. सो द करंट ID इज द सेम एवरीवेयर, बट J एंड द करंट डेंसिटी कैन वेरी फ्रॉम पोजिशन टू पोजिशन. इस सेकेंड पॉइंट की क्या एक्सप्लेनेशन है कि करंट डेंसिटी चूंकि पर यूनिट एरिया होती है, और एरिया हमारा चैनल विड्थ जो है वो वेरी कर रही है एज वी मूव अलोंग फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, लेकिन टोटल करंट चूंकि ये इसमें एरिया आपका नहीं आ रहा तो वो सेम होगी. तो इस करंट डेंसिटी को अब हम एक और डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं. आपको अपने सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉज से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल वेरिएशन इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस. के अगर हमने y एक्सिस अलोंग द लेंथ ऑफ द सबस्ट्रेट लिया है, हॉरिजॉन्टली हमने y एक्सिस को लिया है, तो d phi by dy इज सिंपली द इलेक्ट्रिक फील्ड. और नेगेटिव साइन यहाँ इसलिए इंडिकेट किया है कि चूंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन सिग्निफाइज द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. और जब हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने करंट डेंसिटी के फॉर्मूले में, तो ये हमारे पास एक करंट डेंसिटी आ गई इलेक्ट्रॉन्स की इन द फॉर्म ऑफ मोबिलिटी एंड द पोटेंशियल दैट यू हैव अप्लाइड from source to drain respectively, and this potential undergoes variation as the electrons move along the y-axis. इस सिंपल करंट डेंसिटी के रिलेशनशिप से आप यहीं इस पॉइंट पर अप्रिशिएट कर सकते हैं कि करंट डेंसिटी जो है वो मोबिलिटी पर डिपेंड कर रही है और पोटेंशियल पर, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है, ड्रेन के पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है, और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी पर आपकी करंट डिपेंड कर रही है. तो अब इस करंट डेंसिटी को इवेल्युएट करने के बाद ये देखिए, हमने सिंपली करंट डेंसिटी को इवेल्युएट कर लिया इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस d phi by dy which we apply to the drain, and now we can calculate the total current I by integrating it between the total length of the channel length, which is the end of the source contact to the beginning of the drain contact. तो इसको करने के बाद हम इस n को हम चार्ज पर यूनिट एरिया की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज़ द चार्ज डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अक्यूमुलेटेड इन द इन्वर्शन लेयर. ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स करने के बाद ये हम टोटल करंट डेंसिटी हमने निकाल ली. तो सिंस वी आर मूविंग फ्रॉम सोर्स, द पोटेंशियल इज वेरिंग फ्रॉम सोर्स टू द ड्रेन, तो हम इस पोटेंशियल को इंटीग्रेट कर लेते हैं बिटवीन 0 टू VDS, क्योंकि ग्राउंड हमने किया हुआ है सोर्स को, और द पोटेंशियल एट द ड्रेन इज VD. तो ये हमारे पास निकल आया रिलेशनशिप ड्रेन करंट का. इसको मैं और आगे लेके चलती हूँ, और इस ड्रेन करंट को अब मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ. ये देखिए यहाँ ये चार्ज को अब मैंने एक्सप्रेस कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस, ऑक्साइड कैपेसिटेंस, जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, म्यू एन विच इज़ द मोबिलिटी,
और वोल्टेज को अब मैंने एक डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया है इंटीग्रेट करने के बाद, क्योंकि जैसे मैंने कहा जो पोटेंशियल है वो वेरी हो रहा है फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन एज वी मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल। तो हमारा जो इफेक्टिव पोटेंशियल है दैट इज़ नॉट Vg, इट इज़ Vg माइनस Vt एंड इट इज़ ऑल्सो मल्टीप्लाइड। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये मेरे पास फाइनल रिलेशनशिप आ गया। और आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी हम उस रीजन में हैं कि जहाँ करंट जो पोटेंशियल हमने ड्रेन को लिया है दैट इज़ पॉजिटिव बट स्टिल less than the value at which the current saturates. So this equation represents a linear relationship between the current and the voltage, and gate voltage, as I have expressed, is greater than the threshold voltage. तो इन ये सिंपल रिलेशनशिप्स अब हमने डिराइव कर लिए हैं। दो डिफरेंट रिलेशनशिप, एक अप्लाई करेगा लीनियर रीजन में और दूसरा अप्लाई करेगा saturation region में. So ID will increase as VDS is increases, but when VG becomes equal to the difference, that is VG minus VD is equal to threshold voltage, pinch off of the channel occurs and current saturates when VDS is increased further. तो इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इस क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम VD दैट इज़ ड्रेन वोल्टेज को वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू VG, देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन अ पिंच ऑफ टेक्स प्लेस, और उसके बियॉन्ड अगर हम ड्रेन वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो हमारी करंट नहीं बढ़ती. दिस वैल्यू ऑफ VDS इज कॉल्ड द VDS सैचुरेशन, दैट इज़ वो पॉजिटिव वैल्यू वो ड्रेन पॉजिटिव वैल्यू जो कि VG माइनस VT के बराबर हो जाए. एंड इफ़ यू रिमेंबर VG माइनस VT इज़ कॉल्ड द इफेक्टिव और ओवरराइडिंग वोल्टेज. तो उसके बियॉन्ड फिर हमारी जो है करंट इंक्रीज नहीं होगी. तो वी हैव वेरी क्लियरली डिमार्क्ड रिप्रेजेंटेड टू रीजन्स. एक वो रीजन जिसमें ड्रेन वोल्टेज इफेक्टिव वोल्टेज से गेट इफेक्टिव वोल्टेज से कम हो तो करंट राइज करेगी लीनियरली विद द इंक्रीज इन ड्रेन वोल्टेज, और दूसरा जब ड्रेन वोल्टेज इफेक्टिव वोल्टेज से बराबर हो जाए तो हमारी करंट इंक्रीज नहीं होगी एंड वी हैव अचीव्ड अ saturation region. So with the help of these 3 or 4 transparencies in which I have listed some basic equations for the calculation of the current and current density and current in terms of the capacitance per unit area of the oxide layer, we can calculate the drain current as a function of the drain and gate voltages. Having calculated mathematically, quantitatively these relationships, now we can move on to discuss the various shape or variation in the currents itself. ये एक just artistic sketch है ड्रेन करंट वर्सेस ड्रेन वोल्टेज का, और आप ये देख रहे हैं कि इसको मैंने 3 डिस्टिंक्ट फॉर ऑब्वियसली फॉर डिफरेंट वैल्यू, each curve represents a different value of gate voltage. तो जो आपकी बिल्कुल VD एक्सिस पे जो करंट की लाइन होगी, यानी जब ज़ीरो ड्रेन करंट होगी, वो कॉरस्पॉन्ड करेगी उस VG वैल्यू को जब आपने VG को भी कोई वैल्यू नहीं दी हुई है. यू सी 4 डिस्टिंक्ट रीजन जिनको मैंने लेबल किया है A, B, C and D. A is the triode region जिसमें ID current rises linearly in response to the drain voltage, and then B region जिसमें ये आप bend होना शुरू हो रही है, saturate होना शुरू हो रही है, and then C region in which the current variation in current is flat, that is the current is saturated, and obviously C region is called the saturation region. And then we have the breakdown region D. We will not discuss the breakdown region in our lecture today. We shall restrict ourselves only to the 2 possible regions, that is A, B and C. And then you also see a dashed curve which represents that particular value of the drain voltage at which
the linear region shifts towards the saturation region. In other words, it's a boundary between the triode region and the saturation region. इसकी मैं आपको एक सेपरेट स्लाइड भी दिखाऊंगी इस डैश्ड कर्व की, जो और उस पर्टिकुलर वैल्यू को भी हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे कि किस खास ड्रेन वोल्टेज पर जाके कर्व्स सैचुरेट होना शुरू हो जाती हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड द बाउंड्री वैल्यू ऑफ द ड्रेन वोल्टेज. ये एक स्कीमेटिक आर्टिस्टिक फ्रॉम एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एक स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन है एक एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की. और आप देख रहे हैं सर्किट सिंबल मैंने लगाया हुआ है. सिंस द एरो हेड इंडिकेट्स इट इज़ एन एन चैनल ट्रांजिस्टर एन मॉसफेट, और करंट की डायरेक्शन फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स है, एंड द सोर्स करंट इज इक्वल टू द ड्रेन करंट. Why? Because the gate current is 0. There is no gate current flowing. Gate has been biased in the positive polarity. Similarly, the drain has been biased with the positive polarity with respect to the source terminal. तो इस transparency में मैंने आपको दोनों voltages VGS as well as VDS दिखाई हैं, उनकी polarities भी आपको दिखाई है. The three currents originating from the three electrode terminals IG, ID, IS भी दिखाई हैं और इनकी respective directions भी दिखाई हैं. So this figure shows an N-channel enhancement type MOSFET with voltages applied and with the normal directions of the current flowing in the transistor. So this is just a schematic representation of the circuit of the MOSFET transistor. These are the beautiful characteristics, output characteristics of the MOSFET transistor, N-channel of course, and working in the enhancement mode. Enhancement mode से, to repeat once again, हमारी क्या मुराद है कि जैसे जैसे आपकी गेट वोल्टेज बढ़ती जा रही है हमारी चैनल की डेप्थ भी इंक्रीज कर रही है. इट इज़ इंक्रीजिंग विद इन द पी टाइप सबस्ट्रेट. तो आपने देखा कि अभी ये वो सर्किट डायग्राम है जिसमें बाइसिंग एंड करंट डायरेक्शंस दिखाई हैं, और इस एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की अब हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं. So this shows a typical set of ID and VD characteristics. It's a beautiful illustration, and you could see the triode region as well as the saturation region. Triode region मैं label कर रही हूँ इन दो regions को A and B में, कि जहाँ A is the region in which the currents are really linear in response to the voltage, drain voltage, and B जहाँ ये taper off होनी शुरू हो गई हैं और ultimately ये saturate हो जाएंगी. So A and B region now have been shown to be as the triode region and the blue is the saturation region. एक चीज़ और आप appreciate करेंगे इस characteristic set में कि जैसे जैसे हमारी VGS की value बढ़ रही है, the spacing between the respective curves are also increasing. यानी जैसे जैसे हम अपवर्ड्स जा रहे हैं, जैसे जैसे हम वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं, हमारी स्पेसिंग कर्व्स की भी इंक्रीज हो रही है. नाउ लेट्स स्टार्ट द ग्रे एरिया इज द वन जिसमें ड्रेन वोल्टेज VGS से कम है. एक्चुअली नॉट VGS बल्कि VGS माइनस VT. VG माइनस VT इज़ द इफेक्टिव गेट वोल्टेज. जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर आप गेट वोल्टेज को कुछ बहुत छोटी थोड़ी if you apply a very small gate voltage, still current doesn't flow. So the current has to, in order for the current to flow, the gate voltage has to be some minimum value, some minimum positive value. तो ये वो minimum positive value है जिसको जब आप VGS में से subtract करते हैं तो that is called the effective gate voltage. तो जब ड्रेन वोल्टेज इफेक्टिव गेट वोल्टेज से कम है तो हमारी करंट्स जो हैं वो लीनियरली राइज कर रही हैं. द डिवाइस इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टर, यानी ड्रेन से कैरियर की जब फिजिकल हम मैकेनिज्म देखें, द कैरियर्स आर फ्लोइंग, द चार्जेस आर फ्लोइंग फ्रॉम source to drain in response to this voltage that you have applied to the drain. तो अभी हम ग्रे रीजन में थे which is termed as the triode region.
अब डैश्ड लाइन के बियॉन्ड, और डैश्ड लाइन क्या है? इट्स अ बाउंड्री बिटवीन द ट्रायोड रीजन एंड द सैचुरेशन रीजन, और ये किस वक्त होती है वो आपको लॉजिकली नज़र आ रहा है कि ब्लू एरिया में ड्रेन वोल्टेज एक्सीड कर जाती है एक्सेस गेट वोल्टेज से, ग्रे एरिया में ड्रेन वोल्टेज लो है, कम है बनिस्बत एक्सेस वोल्टेज के। नेचुरली जब ड्रेन वोल्टेज बराबर हो जाए VG माइनस VT के, तो दैट इज टर्म्ड एज द बाउंड्री वोल्टेज। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप ये देखिए कि ये बाउंड्री वोल्टेज जो है, जिसमें आपकी कर्व्स फ्लैट होना शुरू हो जाती हैं, ये बाउंड्री वोल्टेज बतदरीज इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे आपकी गेट वोल्टेज इंक्रीज कर रही है। दैट इज VGS इज इक्वल टू VT प्लस, यानी गेट वोल्टेज जैसे जैसे आपकी इंक्रीज कर रही है उसी तरह आपकी जो है VDS यानी बाउंड्री वोल्टेज इंक्रीज कर रही है, यानी कर्व आपको डैश्ड कर्व में शिफ्ट नज़र आ रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव VD वोल्टेज। तो saturation region and triode region has been illustrated beautifully in this IV characteristic curve, और अब हम, और ये उसका सर्किट था जिसकी this slide depicts the ID-VD characteristic curves। अब हम इनके quantitative relationship देख लेते हैं depending upon the three regions that we have earmarked। The current voltage characteristics of the previous slide show that there are three distinct regions of operation of the MOSFET transistor, enhancement type transistor। एक दफ़ा फिर हम इन regions को देख लेते हैं। The first one being the cutoff region। ये cutoff region आपको नज़र आ रहा है जो मैंने बिल्कुल बॉटम में मार्क किया हुआ है। The horizontal axis पे, यानी voltage axis पे अगर आप देखें तो एक ब्लू लाइन मैंने इंडिकेट की है, दैट इज़ द ज़ीरो करंट इन रिस्पॉन्स टू द ड्रेन सोर्स अप्लाइड। तो ये ड्रेन वोल्टेज आप अगर बढ़ा भी रहे हैं टू सम 4 वोल्ट्स मसलन, फिर भी आपको ड्रेन करंट नहीं मिल रही क्योंकि हमारा VGS जो है, गेट वोल्टेज जो है वो बिलो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। तो इस रीजन को जब गेट वोल्टेज बिलो थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो उसको हम कट ऑफ रीजन कहते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ लिखी हुई है जो मैंने उस पिछली मैथमेटिकल स्लाइड्स में आपको शो की थी, दैट इज़ द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कैपेसिटेंस और width over length, that is the channel width over channel length। These are terms as some factor Kn, constant factor Kn, और ये मैन्युफैक्चरर जो है ये डिज़ाइन करता है इनकी, ये these values are incorporated into the design structure during the fabrication technology। तो इसलिए ये fabrication parameters भी कहलाते हैं। अब ये एक रीजन द कट ऑफ रीजन है जो ये आपको इस ट्रांसपेरेंसी में मैंने दिखा दिया, बिल्कुल एट द बॉटम ऑफ द IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व यू सी द कट ऑफ रीजन, एंड देन वी हैव द ट्रायोड रीजन, और ट्रायोड रीजन आपको ग्रे एरिया में ट्रायोड रीजन नज़र आ रहा है, एंड देन वी हैव द saturation region। The saturation region is obviously the blue region। तो ये 3 रीजन हमने आइडेंटिफाई किए हैं IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व में, और इन तीनों रीजन्स को अब हम कोरिलेट करेंगे विद द ID करंट निकालेंगे। इस ट्रांसपेरेंसी में मैंने दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके आपको दिखा दिया कि लेफ़्ट पे आपको वो सर्किट नज़र आ रहा है जिसमें हमने बाइसिंग दी हुई है, और राइट पे आपको बाइसिंग और दी ड्रेन करंट एज वेल एज दी बाइसिंग गेट की और ड्रेन दोनों की नज़र आ रही हैं। In the saturation region is mostly used when we are operating the MOSFET as an amplifier, and the cutoff region and the triode regions are utilized when we are operating the MOSFET device in the switching mode of operation। तो ये 2 मोड्स मैंने दोबारा आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि अब हम ट्रायोड ऑपरेशन को पहले डिस्कस करेंगे। ये देखिए, इफ़ यू गो बैक अगेन
टू दीज। कट ऑफ रीजन को हमें डिस्कस करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर ड्रेन वोल्टेज इन एनी केस ज़ीरो है। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली द ट्रायोड रीजन एंड द सैचुरेशन रीजन, कि जहाँ आपको वेरिएशन ऑफ करंट एज ए फंक्शन ऑफ वेरिएशन इन वोल्टेज स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम ट्रायोड रीजन के ऑपरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। टू ऑपरेट द एन चैनल मॉसफेट ट्रांजिस्टर इन द ट्रायोड रीजन, द लॉजिकल थिंग जो मैंने अभी शुरू में आपको बताई थी कि हमें एक चैनल इंड्यूस करनी है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई चैनल नहीं होगी, अगर आप गेट को भी वोल्टेज दे रहे हैं, ड्रेन को भी वोल्टेज दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए एक पाथ आपने क्रिएट करना है, सो दैट देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द n प्लस हैवीली डोप्ड सोर्स एंड n प्लस हैवीली डोप्ड ड्रेन। वो तभी हो सकता है जब उन दोनों के बीच में एक n इंड्यूस्ड n चैनल आप क्रिएट करें, जो फिर सोर्स और ड्रेन को फिजिकली कनेक्ट कर देगी। तो वो चैनल हमें इंड्यूस करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने लिखा है टू बिगिन विद द क्राइटेरियन ऑफ ऑपरेशन इज, कि सबसे पहले हम करंट को चलाने के लिए, कैरियर्स को मूव करने के लिए, टू इन ऑर्डर टू गेट द करंट इन द ट्रांजिस्टर वी मस्ट create a channel which has to be induced. That is why I write that in the triode region we must first induce a channel. And channel कब induce होती है, ये चीज़ें फिर repetition है slides की। To induce an N channel we have to apply some minimum voltage to the gate, and that minimum voltage is defined as the threshold voltage. To give you an idea, टिपिकल ट्रांजिस्टर्स में थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है वो, जैसा मैंने अभी बताया कि इस फैब्रिकेशन पैरामीटर, ये फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के दौरान इसकी वैल्यू इस्टेब्लिश कर ली जाती है, लेकिन टिपिकल वैल्यूज़ थ्रेशोल्ड वोल्टेज की हैं अबाउट 0.5 वोल्ट टू अबाउट 1.5 वोल्ट। इसी तरह VGS की वैल्यूज़ कैन वेरी फ्रॉम 0 वोल्ट टू अबाउट 5 वोल्ट्स इन टिपिकल मॉसफेट ट्रांजिस्टर्स। तो दो वैल्यूज़ कंट्रोल करनी है ड्रेन करंट को, द गेट वोल्टेज एंड द ड्रेन वोल्टेज। तो दोनों मैंने ट्रायोड रीजन के लिए लिस्ट कर दी हैं कि गेट वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड द ड्रेन वोल्टेज शुड बी लेस देन VGS minus VT, and this is called the continuous channel। कि जब अभी ड्रेन को आपने इतनी वोल्टेज नहीं दी, इतनी वोल्टेज नहीं बढ़ाई कि जो इंड्यूस चैनल आपने बनाई है उसकी थिकनेस में वेरिएशन आ जाए। सो द थिकनेस ऑफ द चैनल स्टिल रिमेन्स कंटिन्यूस यूनिफॉर्म, तो नेचुरली ये वोल्टेज, ड्रेन वोल्टेज इज लेस देन द इफेक्टिव गेट वोल्टेज। The N-channel enhancement type MOSFET operates in the triode region when VGS is greater than the threshold voltage VT and the drain voltage is lower than the gate voltage by at least VT volts. तो ये criterion है, simple two-step criterion for the triode region, for the MOSFET transistor to operate in the triode region. What is a triode region? To repeat once again, it's a region in which the current rises or varies linearly in response to the drain voltage for some fixed gate voltage. So the gate voltage should be greater than the threshold voltage, and point number 2, the drain voltage should be less than the effective gate voltage. In the now this slide 26 gives you the quantitative relationship, यानी mathematical relationship, जो कि current का as a function of voltages that we have applied। ये relationship मैंने शुरू में आपको calculate करके दिया था in the very beginning of the slides। If I can go back again and I'll show you, we had derived this relationship starting from the very simple calculations जो हमने यूज़ की थी। ये देखिए, ये वो इक्वेशन है जो हमने यूज़ की थी, स्टार्टिंग विद द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ द ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी को बिल्कुल टॉप इक्वेशन में मैंने डिफाइन किया है कि ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इज सिंपली Q म्यू N एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब आप नीचे बॉटम में आए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पॉइसन इक्वेशन सेज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए डेरिवेटिव, नेगेटिव डेरिवेटिव dV by dx, और यहाँ पे dV के दैट इज द वेरिएशन इन पोटेंशियल को मैंने phi कहा है।
ये दो सिंपल रिलेशनशिप जो हैं, यानी करंट डेंसिटी की इक्वेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को मैंने इनकॉर्पोरेट किया है और करंट को मैंने इंटीग्रेट किया है between the total length of the channel from source to drain. उसके बाद मेरे पास ये रिलेशनशिप आ गया और चार्ज को जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है Q, द इलेक्ट्रॉन चार्ज, इसको मैंने टोटल चार्ज में कन्वर्ट किया है कि टोटल चार्ज इन द एंटायर रीजन ऑफ द इन्वर्शन लेयर, क्योंकि Qn इज़ द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो अब टोटल लेंथ में हमने चार्ज निकाल लिया। ये सारी सब्स्टिट्यूशन करके ये फाइनली मेरे पास करंट का रिलेशनशिप आ गया था इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज। ये रिलेशनशिप है जो मैथमेटिकली आपको इतनी सिंपल स्टेप्स में 3 स्लाइड्स में मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। दिस इज़ द रिलेशनशिप दैट आई नाउ यूज़। ये वो रिलेशनशिप है जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं। Where Kn is equal to mu Nc oxide is the process transconductance parameter. Mu n is a property associated with the motion of the electrons, that is how easily the electrons flow in response to an applied electric field. तो चूँकि इलेक्ट्रॉन की मोशन ड्रिफ्ट मोशन है इन रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ड्रिफ्ट की जो एक फिजिकली मेजरेबल पैरामीटर है दैट इज़ मोबिलिटी. सो म्यू एन गिव्स यू दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज़ मोबिलिटी, and C oxide is the capacitance per unit area. So both the mobility in turn depends upon the concentration of the electrons that we have in the material. तो semiconductor material की fabrication the metal oxide semiconductor device की fabrication के दौरान ये दोनों parameter, that is the thickness per unit area, that is the capacitance per unit area of the oxide layer between gate and source and drain terminals, and also mobility, ये हम जो हैं वो fabrication के दौरान इन चीज़ों की वैल्यू को establish कर लेते हैं। तो उस मुनासबत से ये जो प्रोडक्ट है म्यू एन कैपेसिटेंस का, दिस इज टर्म्ड एज द प्रोसेस ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर एंड इट्स वैल्यू इज डिटरमिन्ड ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन ऑफ द डिवाइस इटसेल्फ। अब ट्रांसकंडक्टेंस को मैंने एक थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर दी है। ये देखिए आपको बिल्कुल जो लास्ट टर्म आपको नज़र आ रही है पैरेंथेसिस में VDS स्क्वायर, इफ़ VDS इन द बिगनिंग, जैसे मैंने कहा था कि VDS को हम वेरी कर रहे हैं, अगर VDS की वैल्यू बहुत स्मॉल हम चूज़ करें जो कि इस इक्वेशन में निगलेक्ट कर सकते हैं। सो इन द ट्रायोड रीजन इक्वेशन 412 गिव्स यू द current in the beginning, that is at the origin of the triode region, and this equation 411 gives you as we move along, that is as we increase the drain current, drain voltage, sorry. So this linear relationship, अब आप ये देखिए कि equation 412 is a very simple, very beautiful equation which indicates कि ID is directly proportional to the product of the gate and drain voltages. So this linear relationship explains the operation of the MOSFET as a linear resistor whose value is controlled by VGS. कि आप जैसे जैसे VGS को बढ़ाएंगे for a given VGS, constant fixed पॉजिटिव VGS, जैसे जैसे आप ड्रेन करंट को बढ़ा रहे हैं आपका ID इंक्रीज कर रहा है, जो कि आपको इस इक्वेशन में नज़र आ रहा है। तो इफ़ वी कीप VGS माइनस VT कांस्टेंट, तो ये सारी टर्म्स आपकी कांस्टेंट हो जाएंगी। देयरफॉर ID वेरीज डायरेक्टली, that is ID is proportional to VDS, and hence we get a linear relationship, and this is defined as the triode region of operation. अब मैं सैचुरेशन मोड में जाती हूँ और उसी तरह फिर मैं इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ को कोरिलेट करती हूँ कि सैचुरेशन रीजन हम कहते किसे हैं। टू ऑपरेट द ट्रांजिस्टर इन द सैचुरेशन रीजन वी मस्ट फर्स्ट इंड्यूस ए चैनल। ये क्राइटेरियन बिल्कुल वही है जो हमने शुरू में लिस्ट किया था। ये देखिए, for the transistor to operate in any region or for the transistor to operate or give you a current,
the first condition that we have to establish or the first criterion that we have to fulfill is कि हमारे पास एक चैनल इंड्यूस होनी चाहिए। तो वो चैनल चाहे ट्रायोड रीजन हो, वहाँ भी हमें ये चैनल इंड्यूस करनी है, और वो रीजन, तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट क्राइटेरियन है चैनल इंड्यूस करने का, वो सिमिलर होगा चाहे वो ट्रायोड रीजन हो या सैचुरेशन रीजन हो। तो ट्रायोड रीजन में हमने सबसे पहली लाइन क्या लिखी, सबसे पहली कंडीशन क्या लिस्ट की, VGS शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम थर्मल वोल्टेज VT, दैट इज द कंडीशन फॉर इंड्यूस्ड चैनल। यही हम डिमांड कर रहे हैं सैचुरेशन रीजन में भी। तो आप देख रहे हैं कि सैचुरेशन रीजन में भी यही कंडीशन है कि चैनल इंड्यूस करने के लिए गेट वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT, और हमें ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो है वो पिंच ऑफ मोड में हमें कम रखनी है, किससे, VGS माइनस VT से, यानी एक्सेस वोल्टेज से कम है। अगर उससे एक्सीड हो जाएगी तो हम पिंच ऑफ रीजन में पहुंच जाएंगे। तो ये तीनों वोल्टेजेस, द गेट वोल्टेज एंड देन गेट टू ड्रेन वोल्टेज और इन अदर वर्ड्स ड्रेन टू सोर्स वोल्टेजेस, ये इस तीनों इक्वेशंस में लिस्ट कर दी हैं उनकी कंडीशंस, एंड दस वी से दैट द एन चैनल एनहांसमेंट टाइप MOSFET ऑपरेट्स इन द सैचुरेशन रीजन व्हेन द गेट वोल्टेज इज ग्रेटर देन VT and the drain voltage does not fall below the gate voltage by more than VT। इन दोनों को सिंपल अल्फाज में हम कैसे कह सकते हैं कि चैनल इंड्यूस करने के लिए गेट वोल्टेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन VT, और सैचुरेशन रीजन में हमारी ड्रेन वोल्टेज जो है वो इससे एक्सेस वोल्टेज से एक्सीड कर जाती है। And the boundary between the two regions, that is the triode region and the saturation region, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, वो है VD, the drain voltage should be equal to the gate voltage minus VT. This is known as the boundary voltage, which separates the triode region from the saturation region. तो saturation region में ये हमारी current की equation है। So the current varies now as VGS minus VT, excess voltage के square के साथ आप current हमारी vary कर रही है। Now you can see the variation of VGS as with respect to ID। ये वही चीज़ है जो मैंने पहले आपको, ये reproduction है इस curve की। I can go back again to that slide। ये देखिए, ये जहाँ पर जो ये डैश्ड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये है द वेरिएशन या इंक्रीज इन द value, the boundary value, the increase in the boundary potential। बाउंड्री पोटेंशियल से हमारी मुराद है कि जहाँ ट्रांजिशन हो रही है ट्रांजिस्टर की फ्रॉम लीनियर रीजन टू सैचुरेशन रीजन। सो एज वी इंक्रीज गेट वोल्टेज, द बाउंड्री voltage also increases and hence the drain current also increases। ये चीज़ मैंने दोबारा सिंपल उसमें रिप्रोड्यूस कर ली है, ये देखिए। So this current shows the increase in the saturation boundary condition at different values of the gate voltages। और जाहिर है ड्रेन वोल्टेज सैचुरेशन में किस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, VD has to be greater than VG minus VT, जो मैंने दोबारा लिख दी है। So summary के कट ऑफ रीजन में क्या होता है, हमें कोई there is no current flowing in the device at all। In other words, no drain current, no source current, and obviously there was no gate current either। So in the cutoff region, the gate voltage is still very low as compared to some low, and the reference is the threshold voltage। In the triode region, the gate voltage has to be greater than some threshold voltage so that you can induce a channel for the electrons to flow through this channel, and the drain voltage should be less than the effective gate voltage। तो ये दो कंडीशंस हैं वोल्टेजेस की ट्रायोड रीजन में, गेट वोल्टेज की और ड्रेन वोल्टेज की। और मैथमेटिकल यानी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ड्रेन करंट का और वोल्टेजेस का भी मैंने आपको लिख दिया।
सैचुरेशन रीजन में अगेन जो क्राइटेरियन हमारा इंड्यूस चैनल बनाने के लिए है वो मौजूद है, यानी गेट वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, लेकिन ड्रेन वोल्टेज जो है अब वो एक्सीड कर गई है हमारी एक्सेस गेट वोल्टेज से, एंड दी करंट एंड वोल्टेज रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है। तो इस समरी में, इस स्लाइड में आपको ये तीनों चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही हैं कि कट ऑफ रीजन, द ट्रायोड रीजन and the saturation region and their respective voltages also. इस ट्रांसपेरेंसी में मैंने वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं। आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे आपको CV/IV कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रही हैं, और लीनियर रीजन में मैंने करंट एज वेल एज कंडक्टेंस का रिलेशनशिप भी लिख दिया है। सिमिलरली इन दी सैचुरेशन रीजन ये सारी चीज़ें उठा के इकट्ठी हमने एक ही ट्रांसपेरेंसी में सम अप कर दी हैं। Now we would move on to a slightly different aspect, and that is the large signal equivalent circuit model. And let me first show you, go back quickly to this circuit itself. Here I have tried to depict the सिंपल सर्किट जो पहले मैंने शुरू में आपको एक ट्रांसपेरेंसी में दिखाया था, बाइसिंग जहाँ हमने मॉसफेट की हुई थी। इस तरह के VDS हैज़ टू बी पॉजिटिव एंड वी कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द ट्रांजिस्टर बाय वेयरिंग बोथ VD एज वेल एज ड्रेन वोल्टेज एज वेल एज गेट वोल्टेज। तो यहाँ मैंने एक सिंपल आपको सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल दिखाया है फॉर द सेम एन चैनल मॉसफेट के लिए, लेकिन एक चीज़ याद रहे कि ये एक लार्ज सिग्नल मॉडल की चीज़ दिखाई है। तो ये आप देख रहे हैं कि हमने गेट को पॉजिटिव वोल्टेज दी है सो दैट वी कैन इंड्यूस ए चैनल। गेट करंट 0 है जैसे हमने पहले बताया। ड्रेन करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स एंड सोर्स इज़ ग्राउंडेड इस केस में। तो ये क्राइटेरियन जो इस वक्त मैंने आपको दिखाया नीचे बॉटम में लिस्ट किया हुआ है, ये सैचुरेशन करंट का है, बिकॉज VDS इज़ ग्रेटर देन VG माइनस VT, और ब्रैकेट में मैंने आप ब्लू बॉक्स में मैंने सैचुरेशन करंट की इक्वेशन लिखी हुई है, और इक्विवेलेंट सिंबल में मैंने करंट सोर्स के तौर पे ट्रांजिस्टर को दिखाया हुआ है। दैट इज़ द ड्रेन टू सोर्स सर्किट जो है वो ट्रांजिस्टर करंट सोर्स है। So it is a large signal equivalent circuit model for an N-channel MOSFET operating in the saturation region. Having discussed this model, N-channel model, we can now go back to what a large signal equivalent circuit model is. In the saturation mode, MOSFET provides a drain current whose value is independent of the drain voltage VD and is determined by the gate voltage. तो ये एक important characteristic है saturation region की, कि even though हमारी currents drain voltage के बढ़ाने से नहीं बढ़ रही, लेकिन अगर हम गेट की वोल्टेज बढ़ाएं तो वो इंक्रीज हो जाती है। To explain once again, why do they increase with the increase in gate voltage? कि जो आप गेट को ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, आपके और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अक्यूमुलेट हो रहे हैं एन चैनल में, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाए यानी चार्ज स्टोर्ड चैनल में इंक्रीज हो जाए, तो जैसा शुरू में आपने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में देखा, हमारी करंट भी बढ़ जाती है। Thus, the saturated MOSFET behaves as an ideal current source whose value is controlled by VGS according to the non-linear relationship in equation 420. ये equation 420 मैं आपको शुरू में लिस्ट कर चुकी हूँ। तो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये आया कि ट्रायोड रीजन में the device is acting as a resistor, यानी लीनियर करंट आपकी करंट लीनियरली राइज कर रही है, इंक्रीज कर रही है जब हम ड्रेन की वोल्टेज बढ़ाते हैं। लेकिन सैचुरेशन रीजन में हालांकि ड्रेन की वोल्टेज बढ़ाने से करंट इंक्रीज नहीं कर रही, इट इज़ अ सैचुरेशन रीजन, लेकिन गेट की वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट बढ़ रही है। सो देयरफॉर यू कैन say that the device is acting as a current source, and the current magnitude of the current can be controlled simply by increasing the gate voltage if we operate in the saturation region. So the saturation region behaves as an ideal current source whose value is controlled by
gate voltage according to the non-linear relationship. तो relationship तो non-linear है, लेकिन उसके बावजूद करंट आप कंट्रोल कर सकते हैं, करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर सकते हैं by increasing the gate voltage. So these are two very interesting behaviors of the transistor in the triode as well as in the saturation region or saturation mode of the MOSFET transistor. ये जो मॉडल था लार्ज सिग्नल मॉडल, उसको मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया. ये वही चीज़ है कि सैचुरेशन मोड में आप देख रहे हैं करंट का रिलेशनशिप लिखा हुआ है. इट इज़ नॉन लीनियर, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इट इज़ द डिवाइस इज़ एक्टिंग एज अ करंट सोर्स, जिसका सिंबल मैंने बनाया है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज़ कंट्रोल्ड बाय द गेट वोल्टेज इटसेल्फ. नाउ एट द एंड I can list down few slides which depict the summary of the MOSFET transistor, and at the moment in this series of the 3 lectures, we discussed the structure, we discussed the qualitative operation of current flow, and today we derived some mathematical relationship for evaluating the current as a function of applied voltages. We had 2 voltages, one at the gate terminal and the second at the drain terminal. Both the voltages are measured with respect to the source terminal, which is grounded. Throughout these 3 lectures, we had taken the example of an n-channel transistor. Why n-channel? Because of the mobility. आपने अभी देखा कि mobility हमारी current के relationship में mobility का factor मौजूद है, and the electron mobility is quite high as compared to the hole mobility. And also we had chosen to discuss the enhancement type. तो हमने n-channel MOSFET and enhancement type device को discuss किया था. तो ये तीनों मोड ऑफ ऑपरेशन अलग से फिजिकल स्ट्रक्चर भी दिखा दिया है और उनकी वेरिएशन ऑफ द करंट भी दिखाई हैं कि व्हेन द ड्रेन वोल्टेज इज वेरी स्लो, वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द गेट वोल्टेज, द करंट जस्ट स्टार्ट्स टू राइज लीनियरली, एंड देन we have the boundary between the triode region and the saturation region, जिसको हमने कहा the onset of the saturation region. And this onset of the saturation region current characteristic को हम correlate कर सकते हैं physical mechanism से. तो इस 36 स्लाइड की इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप फिज़िकली जो मैकेनिज़्म हो रहा है कैरियर्स के साथ, वो हमने कोरिलेट किया है CV कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, कि पॉइंट P, पिंच ऑफ पॉइंट P पे जब हम पहुंचते हैं, यानी जब ड्रेन के साथ पिंच ऑफ शुरू हो जाता है, डिप्लीशन रीजन काफ़ी वाइडन हो जाता है, तो फिर हमारी IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है उसमें सैचुरेशन का ऑनसेट शुरू हो जाता है, एंड देन बियॉन्ड सैचुरेशन हमारी कर्व फ्लैट हो जाती हैं. तो ये 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने क्वांटिटेटिवली आज के लेक्चर में डिस्कस की. नाउ आई कैन लिस्ट अ फ्यू good things, good points of using metal oxide semiconductor transistors. That is a majority carrier device. अगर आपको याद हो तो मैंने ये comparison बिल्कुल शुरू में भी किया था कि bipolar junction transistors, by the name itself implies कि bipolar junction transistors में both majority as well as minority carrier they both take part in the flow of current. Majority moves under the influence of diffusion due to diffusion, and minority moves due to the field, and hence their motion is the drift motion. यहाँ पर हमारे single only one type of carriers move, जैसे आपको इन 3 lectures में मैंने बताया. We are considering only the n-channel transistor, and therefore it's a unipolar device. And not only the single type of carriers are moving, they are moving under the influence of an applied electric field, hence they execute a drift motion. They undergo a drift motion, and only one type of carriers move, and hence the 2 names, the N MOSFET and the P MOSFET. Typical switching frequencies, tens and thousands of kilohertz. On a resistance increase rapidly with rated blocking voltage, and the device of choice for blocking voltages less than 500 volt,
and over about 1,000 devices are available. Different kinds of MOSFET devices are available, and but they are useful only at low power levels, and that is about 100 watt. So these are some listing of the good points. Then we can make another comparison of the importance of these devices: very large scale integrated circuits, low fabrication cost and small sizes, and their low power consumption. Their applications are listed, and their basic properties are again listed as I mentioned above. They are unipolar devices, very high input impedance, capable of power gain, and 3 or 4 terminal device. If we ground the body terminal with the source, then it's a 3-terminal device. Otherwise, it's a 4-terminal device labeled as source drain and body gate source drain, and the 4th being the substrate itself. Or 2 possible channels हैं. We can have an N-channel transistor and we can have a P-channel transistor. तो ये basic properties मैंने दोबारा list कर दी हैं. Some of the advantages and some of the disadvantages. It's a voltage control device. जैसे मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि हम गेट वोल्टेज से सोर्स ड्रेन करंट की सोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं. लो गेट लॉसेस, पैरामीटर्स आर लेस सेंसिटिव टू जंक्शन टेम्परेचर, क्योंकि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हमने देखा कि is heavily dependent, the beta, the transconductance is heavily dependent on the variation on temperature. तो ये कुछ सिंपल एडवांटेजेस और लिमिटेशंस इसमें डिस्कस की हुई हैं. एक और जो इसकी जो चीज़ एक हमने एडवांटेज में हाईलाइट की थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में हाईलाइट की थी, उसी को मैंने लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस में भी लिस्ट कर दिया है कि इसे यूनिपोलर वोल्टेज डिवाइस. क्योंकि आप जैसे आपने देखा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हम इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते थे, एक पोलैरिटी लगती थी, और बेस कलेक्टर जंक्शन में रिवर्स पोलैरिटी लगती थी. यहाँ सिर्फ एक सिंगल पोलैरिटी से बोथ गेट एंड source, drain and gate both are biased, and they are unipolar devices as well. So that brings me to the end of this series on the MOSFET transistors, and in my next lecture we would calculate some numerical problems as we had done during the course of this subject, that we had illustrated the method by which we can solve some problems, because that gives you an idea of analyzing various circuits and their operation. So I look forward to seeing you again, and thank you so much. Allah Hafiz.